आपकी एप्लीकेशंस एलिजिबल बनेगी. If you are not a bank or any other institution, then there is no need to go through RBI. You can directly go through SEBI. So processing the application, is the application is eligible, अगर हाँ तो registration certificate issue हो जाएगा. And if it is not, then what are the queries, what are the deviations that should be communicated, and later on you are also allowed to get your application filed over there. How to apply? You can note down the address. आप कहाँ अपनी एप्लीकेशंस कर सकते हो. इट इज़ SEBI SEBI डिवीजन ऑफ FII एंड कस्टडियन, प्लॉट नंबर C4A G ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई. FII किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं? देर आर द लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज इन विच FII कैन इन्वेस्ट. प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट तो यही है. यूनिट स्कीम है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, डेरिवेटिव्स है, कॉमर्शियल पेपर्स है. इस सब में प्रोहिबिशन है. FII कैन नॉट इन्वेस्ट देयर मनी इन द फॉलोइंग फंड. बिजनेस ऑफ चीट फंड, निधि कंपनी, एग्रीकल्चर और प्लांटेशन में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते. रियल एस्टेट बिजनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस, उसमें भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते. ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, उसमें भी उनका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा. फैक्टर्स रिक्वायर्ड टू अट्रैक्ट FII. आप FII को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो? थ्रू लो कॉस्ट, क्वालिफाइड एजुकेटेड स्किल लेबर पूल, लेबर लॉन्ग टर्म मार्केट पोटेंशियल, एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज, population of a country also plays a important role. Then there are other factors like political and environmental stability, financial incentives. आप incentives कितने दे रहे हो? Currently the government is working on make in India concept, and रेड टेपिज्म दूर, ब्यूरोक्रेसी दूर हुई है, सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल रहा है. सो these are the administrative incentives. मोर ओवर अगर आप उनको टैक्स में बेनिफिट्स दे रहे हो, सो दिस आर कॉल्ड द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. फिजिकल इंसेंटिव्स भी दे सकते हो इन द फॉर्म ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज रिलैक्सेशंस. इनडायरेक्ट इंसेंटिव्स दे सकते हो. लैंड आप प्रोवाइड करो एट कंसेशनल रेट. इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर इज बीइंग प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट. सो दीज आर द इनडायरेक्ट इंसेंटिव्स. वाइब्रेंट गुजरात कर रहे हैं. अदर स्टेट्स आर ऑल्सो डूइंग such type of activities. So in interstate also they are trying to attract more money in the form of foreign exchange कि भाई आप यहाँ पे आकर business करो. So these are the sources or the ways to attract foreign investment in India. फ़ायदा क्या होता है FII? What are the merits of FII? अगर फॉरेनर्स इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में तो इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? एनहांस फ्लो ऑफ इक्विटी कैपिटल. इक्विटी बढ़ती है. द पॉइंट इक्विटी एनहांसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. the country is getting money in the form of ownership, not in the form of any debt securities और borrowed हो रहा है तो वो इक्विटी फॉर्म में हो रहा है. एंड वो ज़्यादा पॉजिटिव है बिकॉज द फॉरेनर्स आर टेकिंग रिस्क बाई इन्वेस्टिंग मनी इन इंडिया. एंड ऑन द अदर हैंड we are not burden of paying any amount of interest towards them. Managing uncertainty and controlling risk. There are experts and professional in doing business, so they can easily identify the risk factors of any country, and they can also try to influence the very becoming of these factors. वो कंट्रोल कर सकते हैं, वो मतलब एडवाइस दे सकते हैं. इवन दे कैन हेल्प टू सॉर्ट आउट द डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ एनी कंट्री. Improving capital market. Since the inflow of FII, the investment in capital market in the form of primary issue or secondary issue, it is being improved, or it has been shown constant growth since 1981. So बाहर से पैसे आ रहे हैं और इन्वेस्ट हो रहे हैं तो उस पर कैपिटल मार्केट का डेवलपमेंट होता है, उनका क्वांटम बढ़ जाता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इंक्रीज होता है. इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस. FI are basically investors, and they are the near owners of a company. So आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा. You have to follow the international standard of reporting, whether it is in the form of IFRS. Even you have to change your taxing system.
that what we are currently doing, migrating from VAT to GST. तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का अपना आपका रिपोर्टिंग होना चाहिए, टैक्स सिस्टम भी ऐसी होनी चाहिए, because these are the preconditions for any foreign individuals to do business in any part of the world. So to be at the par of world's financial standards and conditions, तो कॉरपोरेट गवर्नेंस है वो भी आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा. Benefits of professional skills, they are they come in India having done some work, having done some primary, having gathered some primary information. तो उनकी प्रोफेशनल स्किल्स है, उसकी एडवाइस भी मिल सकती है, एडिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है. इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, दे आर coming, if the US people is coming to India, then come with a bag full of US dollars. जापानीज आ रहे हैं तो येन में आ रहे होगे, इटालियन पीपल आर कमिंग विथ लीरा. तो फॉरेन एक्सचेंजेस है, दे ऑल कन्वर्ट इनटू US डॉलर्स फर्स्ट. तो वो फॉरेन एक्सचेंज हमारा बढ़ रहा है, बिकॉज दे गिव मनी इन डॉलर्स टू गेट इन्वेस्टेड इन इंडिया. सो आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो क्राइसिस थी 1991 में, कि जिसके कारण हमें करना पड़ा, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हमारा बढ़ता है. डोमेस्टिक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, बिकॉज इवन लाइक दैम the citizen of country are also having the opportunity to get return on investment. वो invest कर रहे हैं तो आप भी invest करो, and by this way the saving from home can be diverted into stock exchanges in capital market. अब उसमें invest करके you can get return from your money invested. Parameters for economic success of a country. We are running second after China in foreign institutional investments in a country, at the platform, at the world platform. So these are the parameters. If FII is coming there, then there must be something कि भाई इस देश में कुछ है कि उसके कारण यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है. So from that you can identify that whether how far the country is growing in the form of economic development. Demerits, they are not all roses in the form of FII. There are some thorns. Let's see what are they. Potential capital outflows. If they are investing, then also they are also making this investment later on. They are coming here to do business. If they don't find their money worth enough to be invested, and if they are not getting return as per their expectations, तो वो जो capital inflows हुआ था वो outflows भी हो सकता है. And it is very easy, मतलब these investments are in very temporary nature. तो वो कभी भी they can sell easily their securities purchased earlier, and by this way they can easily get their money out of the Indian market. Inflation. The basic definition of inflation is too much money chasing for few goods. But in the backstage of this definition, अगर मनी सप्लाई बढ़ती है इकोनॉमी में तो अभी इन्फ्लेशन हो सकता है. आपकी अपनी डोमेस्टिक करेंसी है, आप उनको भी इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड पीपल फ्रॉम आउटसाइड इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन इंडिया. So due to the increase in money supply, there may be a reason of at the later stage कि भाई inflation भी बढ़ सकता है. Problems to small investors. They are investing. Foreign institutional investors are investing very huge amount in any country. तो small investors को भी कभी benefit नहीं मिलता. Either they are subscribing in new issues. Those have been laid down some conditions, and some grouping is there, some classifications of investment is there, and some reservation is also made for small investors. But still also there is some concern of small investors who are investing in capital market. Adverse impact on exports due to appreciation of currency. This is the very basic thing. They are giving dollars and they demand rupees in that exchange because they want to invest in India. So the demand of rupee increases, and this will make the rupee stronger, and the appreciation of currency is made. So what happened, it is we can easily identify, अगर हमारे करेंसी की कीमत बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है, तो क्या होगा कि एक्सपोर्ट्स को वो एडवर्सली अफेक्ट करेगा.
people are getting less dollar in compared to rupees, that what they get earlier. So wo, if your money, if your currency is little bit down than of a foreign currency, then and only you can motivate to do exports. Until and unless not, तो अगर एप्रिसिएशन हो रहा है करेंसी का तो एक्सपोर्ट्स भी एडवर्सली अफेक्ट होगा. इश्यू ऑफ प्रॉमिसरी नोट्स, दिस इज सम व्हाट टेक्निकल इश्यू. प्रॉमिसरी नोट्स जो इश्यू होते हैं दे आर एनोनिमसली इश्यू बिकॉज दे कैन इजीली ट्रांसफरेबल, नेगोशिएबल. So, if in Indian economy, promissory notes, if I purchase promissory notes, then I can easily endorse to any foreign institutionals or any foreign individuals. So, in that manner, we cannot identify the exact order or where the promissory notes are moving from one person to another person, as they are not officially registered anywhere. तो प्रॉमिसरी नोट्स में इन्वेस्ट करना एफआईआई को, वो एक तरह से गवर्नमेंट को साइड में करके इन्वेस्ट करना है. That is also come under the demerits of FII. There are some regulations. FII इन्वेस्ट करता है तो रेगुलेशंस के साथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वी कैन नॉट मेक अवर कंट्री ओपन कि भाई आप आओ और बिजनेस करो, ऐसा नहीं कर सकते. सो देर आर सम लिमिटेशंस दैट वी कैन सी इन दिस स्लाइड. टैक्सेशन इज ऑल्सो अप्लाइड. जो अप्लाई हो रहा है इंडियन सिटीजन को, वो कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म है, डिविडेंड डिक्लेरेशन में भी है, और इंटरेस्ट इनकम में भी टैक्स लग सकता है एफआईआई को. देन द मेन पॉइंट, द वेरी थ्रस्ट ऑफ द एफआईआई, कि इकोनॉमी को वो असर करता है या नहीं करता. अगर करता है तो कितना, मतलब द क्वांटम कितना होगा, लेवल कितना होगा. FI leads to appreciation of the currency. FI need to maintain an account with RBI for all transactions. To understand the implication of FI, the exchange rate, we have to understand how the value of one currency appreciate or depreciate against the currency. FI and exports. If our Indian currency appreciates just because of FI, there is adverse effect to our export. That what we learned earlier. When cap on FI is high, then they can bring a lot of funds in country's stock market. There is also cap, or there is a higher limit prescribed by the government कि भाई आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हो, up to this extent you have to invest in Indian market. So if this cap is little bit lifted up, तो उसके बाद क्या होगा कि वो फ्लो भी इंक्रीज हो सकता है, इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है. FIIs की इंडियन मार्केट में अगर इफेक्ट देखी जाए, सो we can identify that the our Sensex, our stock exchange is moving more over with the movements of FII. RBI is also told that the 10% movements in FII can lead to 35% fluctuations in the market price of the securities and functioning of the Sensex. In the past 4 years, there has been more than $141 million worth of FI funds invested in India. 41 million trillion worth का investment हुआ है. So you can identify the quantum of FII's influence in Indian stock market. वो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. सो पूरा जो सेंसेक्स का मूवमेंट है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो FII के मुताबिक हो सकता है. द लार्जर द चंक दे आर हैविंग, the larger the authority or larger the degree of exercising their power they are having in stock exchange movements. FII as a major cause of market crash. We have seen a great market crash in 2008 with the Reliance Power issue. So the Indian markets have been lapped reeling under the impact of liquidity crunch caused by the multiple factors. It began with two mega issues of Reliance Power and Future Capital Holdings, which drew out huge amounts of money from the market. FII bowed out from the capital market with more than 10,000 crore. तो उस वक्त 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था, वो विड्रॉ हुआ था, एंड ड्यू टू दैट द मार्केट हैज़ बीन कोलैप्स्ड. तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उतना इन्फ्लुएंस कितना होगा, कि अगर लार्ज चंक है वो अगर आप निकाल लोगे, if you move very base of a chair, then the chair will be collapsed. So the same is happening in Indian market also. That's why it is also called a good friend or the friend in good time.
लेट्स सी द जनवरी में क्या हुआ था 21 to 29 2008 की जो बात है. वी कैन आइडेंटिफाई द नेगेटिव इन्वेस्टमेंट ऑफ FII मेड इन इंडियन कैपिटल मार्केट. It is gradually decreasing and they are getting out their money from the Indian capital market. Investment भी आप दे सकते हो. You can easily identify 3rd April 2008. These are the record high in financial year 15. These are the investment data made by foreign institutional investment in Indian stock market. This chart shows the foreign flows into Indian stocks, that how the movement of Sensex is being correlated with the FII flows. This data shows the 2011's FII flows up to 2015 and the movement of Sensex. When FII is negative, the negative FII shows the deployment, withdrawal of money from Indian market. So when it is negative, the Sensex is also showing the negative return. In 2011, it is $511.75 million, and the Sensex also gave a negative 24% return. So, what we conclude from our discussion कि FII is a fair weather brand. वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अपने benefits के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं. On other hand, the country is also benefiting in the form of foreign exchange. But the care should be taken. Regulations है वो identify करने चाहिए और उनकी movements को observe करना चाहिए. That what's currently government is doing and doing very well, as well as the Ministry of Finance and External Affairs is also concerned with the FII. RBI है वो भी watchdog का काम कर रही है. Even SEBI is doing well to control the flow and monitor the flow of FII in India. So that's it from today's Sandhan discussion on foreign institutional investors. Thank you very much. Have a nice day. Sandhan, All Gujarat Integrated Classroom. સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન.